Assalamu alaikum everyone. Welcome to class 9 biology. Children, previously we had seen the tissue, that is the muscular tissue, muscles tissue. Now today we are going to start another type of tissue, which is the last tissue of your chapter. The name of the tissue is nervous tissue. You people are aware of this word, children, that is nervous tissue. What is nervous tissue, or we can say what is the main function of this tissue? नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है चिल्ड्रन? ये टिश्यू क्या करता है? दिस टिश्यू रिसीव्स द स्टिम्युलस. नाउ व्हाट इज दिस स्टिम्युलस ओवर हियर चिल्ड्रन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू that is stimulus means sudden change in environment. Whenever we are find sudden change in the environment, our body is responding towards that change. For example, if so heavy light of beam is falling into our eyes, we can just close our eyelids at a time quickly. So this is called as sudden change. हमारी body ने respond किया, that is called as what? Stimulus. सो ये टिश्यू क्या करता है? दिस टिश्यू रिसीव्स द स्टिम्युलस एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज द नर्वस टिश्यू. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड दिस स्टिम्युलस. जो भी सडन चेंज हो रहा है एटमोसफियर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अगेंस्ट में जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू विच टिश्यू? दैट इज द नर्वस टिश्यू. दैट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. Getting children? That is transmitting signals. Okay, now nothing much more you have to learn about the nervous tissue in class 9 children. So the cells of the tissue are called as nerve cells, or they are also called as neurons. इस टिश्यू के जो सेल्स हैं या तो उन्हें नर्व सेल्स कहा जाता है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, या तो फिर उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है. What are these neuron and what are these nerve cells children? They are highly specialized cells. वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज सेल्स हैं फॉर रिसीविंग स्टिम्युलस एंड ट्रांसमिटिंग इट्स वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्योंकि जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना चिल्ड्रन, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट. सो इसकी वजह से ये बहुत, इनका जो भी फंक्शन है, जो काम है इनका, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है. Clear? Very rapidly they are doing work. They are transmitting signals from one place to another place. Now where they are present inside the body means, if we going to talk about the location, so children, very first where nervous tissue is present inside our body, so it is present in our brain, then it is present in spinal cord and different nerves which are present in each and every organ of our body. So here the nervous tissue is present. Now the most importantly for class 9, the structure of neuron is important. So now let's see the structure of neuron, or we can say nerve cell. I'm going to draw the neuron cell over here. Okay, now let's talk about the different parts of the neuron cell. Children, this is the one neuron cell. Okay, this part is called as cell body. Cell body is made up with nucleus and cytoplasm. सेल बॉडी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बनी हुई है, राइट. सो दिस इज सेल बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. नाउ यू कैन सी दिस 3 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर. दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन, AXON. This is called as axon. Axon is a single long conducting fiber and it transmits impulses away from the cell body. Axon क्या करेगा? Impulse इसको cell body से दूर ले जाएगा. The lastly, this hair like structures you can see over here, they are called as dendrites. They are called as dendrites. They are the short branched fibers which receive nerve impulses. They are the short branched fiber which receives nerve impulses. So this is the structure of the neuron, children. Okay, now these nerve impulses allow us to move our muscles according to our will.
जो भी हमारी मर्ज़ी होती है, जो भी हमारी कंट्रोल, जो भी हमारी इच्छा होती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे मसल्स को मूव करवा सकते हैं. दैट वी हैड ऑलरेडी लर्न इन मसल्स टिश्यू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द nerve impulses. And one more thing you should have to be remember, children, that combination of nerve and muscle tissue in animals is the fundamental importance as causes rapid movement in response to stimuli. जो भी हम stimuli को respond करते हैं, that response occurs with combination of two different tissues, that is the nervous tissue and muscle tissue. So this much all about in nervous tissue.